Hello and welcome to the fifth match of the Indian Premier League between Rajasthan ke Rajwade and Hyderabad ke Nawab. This is Rima Malhotra. Let me welcome my guests for the show today, Jaydeep Mukherjee and Debasis Sen. Welcome. Thank you, Rima ji. Pleasure to be here. Thank you. So आज एक नई जगह पे मैच है, नए वेन्यू पे मैच है. पुणे में मैच खेला जाएगा. इससे पहले जो मैचेस हुए थे वो थे DY पाटिल, CCI और वानखेड़े. लेकिन आज का जो मैच है वो खेला जाएगा महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में और नई वेन्यू है. 5वां ये मुकाबला है, लेकिन पहला मैच RR का और SRH का. क्या कहते हैं, क्या वही मंत्र रहने वाला है? विन द टॉस, बोल्ड फर्स्ट एंड विन द मैच. देवशीष जी बिल्कुल, यही टेम्पलेट रहा है अभी तक. दिस हैज बीन द टेम्पलेट सो फार. व्हिचएवर टीम हैज won the toss has decided to field first and put up a total. But then let's see what lies in store for us. But I think the toss has happened. If we can get the teams, please. So पहले हम अभिजीत के पास जाते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ग्राउंड पे. अभिजीत, कैसा वहाँ पे माहौल है? वेन्यू नया है आज, फैंस जरूर वहाँ पे काफी एक्साइटेड होंगे. क्या है वहाँ पे माहौल? अभिजीत, कैन यू हियर? Hello. I'm here at the MCA Stadium in Pune, where in some time Rajasthan Royals will take on Sunrisers Hyderabad. Now this is the first match at the Pune after a gap of 4 years. Well, Rajasthan Royals look extremely strong on the paper with the likes of Jose Butler, Devdutt Padikkal, Sanju Samson, Hetmayar, R. Ashwin, Yajuvendra Chahal. Oh, they got a wonderful lineup and are definitely the favourites to win this game. But this is T20 and you never know what can happen. Sunrisers Hyderabad on the other side has the leadership quality of Kane Williamson. They got local boy Rahul Tripathi, Umran Malik, Bhuvneshwar Kumar, T. Natarajan. So they got a very good pace attack. It will be an interesting battle. Let's see who wins. Abhijit Deshmukh from Pune, MCA Stadium. MCA Stadium is going to host Sunrisers Hyderabad versus Rajasthan Royals. And I have with me some fans of Sunrisers Hyderabad. तो कैसा लग रहा है 4 साल बाद पुणे में IPL का मैच? बहुत एक्साइटेड है आज हम कि 4 साल के बाद अभी यहाँ पे IPL हो रहा है. तो हमारा प्लेयर राहुल त्रिपाठी, पुणे करे वो, जो मतलब मराठी में बात कर सकते हैं. राहुल त्रिपाठी इज माय फेवरेट प्लेयर. विलियमसन 2018 के बाद आज 2022 में IPL यहाँ पे हो रहा है. तो बीच में जो ये गैप था, वो गैप अभी हम यहाँ पे निकलने वाले. मतलब बहुत एक्साइटेड है मैच हम देखने के लिए. अभी आप ये बताइए कि सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है जिसके लिए आप पुणे का रोके उनको सपोर्ट कर रहे हैं? सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में ना, राहुल त्रिपाठी ये मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छे. मतलब टीम को जो मोबिलाइज करने का, टीम को वार्म अप करने का. अभी राहुल त्रिपाठी इज मोस्ट फेवरेट प्लेयर फॉर पुणे का. केन विलियमसन भी बहुत अच्छी तरह से कैप्टन है. उनके कैप्टन की एक बहुत अच्छी तरह से निभाई है उन्होंने. IPL भी वो बहुत अच्छी तरह से जीत चुके. तो एकदम जबरदस्त प्लेयर है. राहुल त्रिपाठी जैसे मेरे फेवरेट है, वैसे विलियमसन मेरे फेवरेट है. दोनों अपोजिट है, लेकिन दोनों को मेरा सपोर्ट है. तो इस बार लगता है हैदराबाद जीतेगा? हैदराबाद तो जीतने वाला ही है, क्योंकि राहुल त्रिपाठी तो मेरा फेवरेट है. हैदराबाद. So I have with me some wonderful Punekars. जैसे पुनेरी पार्टी फेमस है, वैसे ही इनके स्लोगन्स भी. तो आप बताइए, आज आप किसको सपोर्ट करने आए हो? राजस्थान रॉयल. किसको? राजस्थान रॉयल. अच्छा, एक बताओ, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? संजू सैमसन. क्यों? वो तो पुणे से नहीं है. वो बैटिंग अच्छी करता है. अच्छा, नाइस. तो आप मुझे बताइए, आप IPL का मैच हो रहा है और आप इंडिया का भी फ्लैग लगा के आ रहे हो. 4 साल बाद पुणे में IPL का मैच हो रहा है, क्या कहोगे आप? ये देश का त्योहार है, इसलिए हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं. आप मुझे बताइए, आज के मैच में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? We are just going for Rajasthan Royals.
आम्ही राहुल त्रिपाठीला सपोर्ट करतो. वी आर सपोर्टिंग राहुल त्रिपाठी. राहुल त्रिपाठी जिंदाबाद, राहुल त्रिपाठी जिंदाबाद. आप इसलिए सपोर्ट कर रहे हो कि राहुल त्रिपाठी पुणेकर है? येस ऑफ कोर्स. तो राजस्थान रॉयल्स भी काफी अच्छा टीम है, क्या कहोगे आप उनके बारे में? राजस्थान रॉयल का जो कैप्टन है संजू सैमसन, वी लव हिज बैटिंग, और उसके साथ ओपन करेंगे देवदत्त पडिक्कल जो भी टेक्निकली बहुत साउंड है, और हम लोग साथ में आज यूजू चहल को सामने सामने बॉलिंग करते हुए देखने का हमें मौका मिलेगा. तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द बैटिंग एंड द बॉलिंग ऑफ राजस्थान रॉयल्स. जयदीप, फैंस ने बता दिया है कि ये केवल लीग नहीं, ये एक इंडिया का त्योहार है. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एकदम सही बोला. माहौल क्या है? इट्स ग्रेट टू सी पीपल एंजॉयिंग देमसेल्व्स. यू नो द टाटा आईपीएल बैक इन इंडिया, इससे अच्छा खबर तो हो ही नहीं सकता. इंडियन प्रीमियर लीग तो इंडिया में होना चाहिए ऑलवेज, बट मुझे अभी भी लगता है दोनों टीम में काफी फर्क है. नो आप टीम्स में हम आएंगे इसके बाद, पर अगर हम टीम देखेंगे पेपर में, तो हमें अभी भी लगता है कि हैदराबाद ने जो उनका जो बैटिंग का इश्यू था उसने सॉल्व नहीं कर पाया. उनके पास डेविड वार्नर थे, केन विलियमसन थे, मनीष पांडे थे, जॉनी बेयरस्टोर थे. तो इनमें से डेविड वार्नर 70-75% रन बनाते थे, तो उनका रन कौन बनाएगा? आप खेल चुके हैं, हम लोग खेल चुके, हमको पता है कि एक मेन प्लेयर जब चला जाता है, लगता है वो 600 रन सीजन में कौन बनाने वाला प्लेयर है. तो वो अभी भी मुझे लगता है बेस्टो को भी छोड़ा इन्होंने. वार्नर का सर इनका इश्यू हो गया, मनीष पांडे को लिया नहीं, उससे प्रॉब्लम नहीं है छोड़ने का. लेकिन आप जितने अच्छी टीम देखोगे आईपीएल में, उन्हें अपनी टीम बना लेता है. यू नो मुंबई हैज बीन सच अ ग्रेट साइड, बट मुंबई लास्ट ईयर, ओके, दे डिडंट क्वालिफाई, but the seven Indian players who played for Mumbai had played for India in the last 7 months. So how good is that? देखिए ओवरसीज प्लेयर तो सब अच्छे होते हैं, सबके पास 4 जो होते हैं दे आर टच एंड गो, तो 19-20 होते हैं उनके पास, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ योर टीम. किसी के पास अच्छे हिटर है, किसी के पास अच्छे ऑलराउंडर है, किसी के पास मैच विनिंग स्पिनर है, लेकिन बाकी 7 जो इंडियन प्लेयर है वो टीम बनाता है. बिल्कुल. इसी पे मैं आपके पास आऊंगी देवशीष, कि आपने अपनी जो बैटिंग की जो क्रीम थी ना, वो आपने रिटेन नहीं की. उसमें एक नाम बॉलिंग का भी जोड़ लीजिए, राशिद खान जो आपके एनी डे मैच विनर थे, वो भी नहीं लिया. तो रिटेन इन्होंने किया था केन विलियमसन जो कि कैप्टन भी है, वो एक अच्छा उनका कैप्टन भी थे, मैच विनर भी थे. लेकिन 2 अनकैप्ड प्लेयर को भी रिटेन किया था, अब्दुल समद और उमरान मलिक. इसके अलावा अगर टीम में नजर डालें तो अभिषेक शर्मा को 6 करोड़ पे इन्होंने वापस खरीदा था. राहुल त्रिपाठी एक अच्छा बाय है, केन विलियमसन कैप्टन है, निकोलस पूरन एक अच्छा बाय है, फॉर्म में नहीं थे लेकिन हर एक सीजन नया सीजन होता है. माकरम एक अच्छा बाय है, अब्दुल सामद एक बिग हिटर है, वॉशिंगटन सुंदर ये एक ऑलराउंडर है जिन पे काफी कुछ निर्भर करेगा, शेपर्ड एक हार्ड हिटर है, भुवनेश्वर की फॉर्म देखनी होगी, नटराजन, उमरान मलिक. ये सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेइंग 11 है. जबकि हम राजस्थान पे नजर डालें तो एक स्ट्रॉन्ग ये साइड नजर आती है. क्या लगता है इन दोनों साइड्स को देख के देवशीष आपको? Rima ji, one thing I would like to share is that both these teams have not done well. Means as far as consistency is concerned, means if you look at last season, Sunrisers Hyderabad has lost 11 matches, and they ended up at the lower half of the table. So I think the key will be how both the captains lead. Obviously, Sanju Samson has been involved in a lot of controversy ahead of the start of the IPL, but it's high time that he focuses on the game and lead the team from the front, because the one major thing that has been against Sanju Samson is his consistency. He's too good a batsman, he's too good a batter, means there's no two ways about it. But it's high time that he jails the team into a good unit. And as far as the teams are concerned, there would be much interest on Natarajan, who is making a comeback in that side for Sunrisers Hyderabad, because we all know how good a bowler he is, and he would be supported by Bhuvneshwar Kumar. We all know how there will be a lot at stake, because with the T20 World Cup just a few months away, I think the performances of these Indian players will be watched very keenly by the selectors. Joydip will definitely agree with me, because this will be a huge season for the Indian players, and
So I would be very keen to see someone like Yajuvendra Chahal as well, and it will be very interesting to see both Ravichandran Ashwin and Yajuvendra Chahal pairing up for an IPL team. So that will be something that the fans will be keenly watching upon. Rima ji. बिल्कुल देवशीष, हम पहले SRH पे रहते हैं। आपका क्या कॉल है इसमें जयदीप की इंडियन प्लेयर्स पे नजर रहेगी? जैसे कि अभी 4 मैचेस हुए हैं, SRH ने टॉस जीता है, पहले बॉलिंग का फैसला लिया है और अभी तक का जो मंत्र है ना, विन द टॉस बोल फर्स्ट, मतलब जो टॉस जीता है वो बॉस बनता है। यहाँ पे भी वही रहने वाला है। पुणे में ब्लैक सॉइल है और साथ में कौन सा ऐसा इंडिया प्लेयर है जिसपे आपको लगता है कि इस पे रहेंगी नजरें और ये एक आज के लिए गेम चेंजर बन सकता है? देखिए रीमा जी, मुझे लगता है कि बिफोर वी कम टू द टीम्स, टॉस में क्या हो रहा है, 3 रीजन है कि हम पहले फील्डिंग कर रहे हैं। एक तो है जो टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू, हमको सबको टारगेट पसंद है, नंबर 1। नंबर 2 इज द फैक्टर दैट यू डोंट नो, पहला मैच हो रहा है, थोड़ा बहुत सीम मूवमेंट हम देखें। जब आईपीएल शुरू हुआ, वानखेड़े में उमेश यादव का बॉल हिल रहा था, और जब बॉल हिल रहा है, सीम कर रहा है, देन इट्स इजियर फॉर यू टू फील्ड फर्स्ट। एंड थर्ड थिंग इज ड्यू। सो तीनों मिला कि इट्स एन इजी डिसीजन कि टॉस जीत के हम फील्डिंग कर रहे हैं। और इधर हम तो मैच नहीं खेले, पता नहीं सीम होगा या नहीं होगा, पता नहीं ड्यू आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अगर आएंगे वी शुड बी इन द फेवरेबल पोजीशन, इसलिए फील्डिंग करते हैं। दैट्स वन। ड्यू मुझे लगता नहीं यहाँ पे आने वाला है। ड्यू मुझे लगता नहीं यहाँ पे आने वाला, थोड़ा ओपन ये ग्राउंड है, क्योंकि अब देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा ड्यू आता है कि नहीं आता, लेकिन डिसीजन सही है ये टॉस का। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं ड्यू आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसीलिए फील्डिंग करते हैं। अगर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम बैटिंग कर लिया, ड्यू आ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। पहला मैच है इसीलिए। सिर्फ लुक एट द SRH टीम, मुझे लग रहा है अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, केन विलियमसन, एडन मैक्रम, निकोलस पूरन, अब्दुल समद। मुझे ये लगता नहीं कि अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, एडन मैक्रम, निकोलस पूरन, इन्होंने किसी भी अभी भी T20 में एक्सेप्ट केन विलियमसन देश का लिए, देयर आर नो बिग डैडीज इन दैट टीम. You know, even somebody like an Aiden Markram is finding his feet in T20 cricket. Nicholas Puran has good seasons and bad seasons. I'm talking about bankers. I'm talking about David Warner, 600 run, Shikhar Dhawan, 600 run. You know, 500 run करने वाला, खराब season 490 run, अच्छा season 680 run. I'm talking about those banking batters. I think that's what's missing in the Hyderabad batting. Yeah, on paper they look a promising side. Abhishek Sharma can do a lot with the bat. Rahul Tripathi has also had good seasons, but he's scored 350 on a good season. I'm talking about the 600 run players, because you need a couple of them. बाकी वो अगर आपके पास 2 प्लेयर है जो 600 करने वाले हैं, फिर 300 350 का काम आता है। लेकिन अगर आपके पास 600 करने वाला प्लेयर नहीं है, फिर वो रन कौन बनाएंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। और राजस्थान पे आते हैं जयदीप, मैं आपसे के साथ ही रहूंगी। संजू सैमसन के बारे में देवशीष ने कहा था कि कंसिस्टेंट एक ऐसा वर्ड है जो अपने आगे वो लगाना चाहेंगे, तो क्या हम कैन वी सी द सेम संजू सैमसन और द कंसिस्टेंट संजू सैमसन दिस टाइम? क्योंकि जब भी बैटिंग करते हैं ना, तो केन विलियमसन को देखें तो पहले गियर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन संजू सैमसन क्या आते हैं तो आईपीएल उनका ना 5वें गियर पे स्टार्ट होता है। पहले 2 मैचेस में पट 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 सेंचुरी, एक लगता है कि इस बार संजू सैमसन कुछ करके दिखाएगा, बट इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट। द मोमेंट टूर्नामेंट आगे जाता है, उनकी परफॉर्मेंस नीचे आती है। और आपको पता है कप्तान होने का जो रिस्पांसिबिलिटी एडेड आता है, स्पेशली द टीम इज नॉट डूइंग वेल। द टीम इज डूइंग वेल, देन एवरीथिंग इज ओके। व्हेन द टीम इज नॉट डूइंग वेल एंड यू हैड अ कपल ऑफ फेलियर्स, आपको पता है कितना ज्यादा प्रेशर आ जाता है। देन यू सिट इन योर रूम अलोन, यू हैव टू थिंक अबाउट द टीम, यू हैव टू थिंक अबाउट योर ओन कंसिस्टेंसी। बट इफ आई लुक एट द टीम, इफ आई कम टू संजू सैमसन, यू नो, यशस्वी जायसवाल, अभी ही इज प्लेइंग फॉर मुंबई रेगुलरली, जॉश बटलर, वी नो, Padikkal in and around the Indian team, Sanju Samson, the skipper, Shimron Hetmeyer has always been in good form. Riyan Parag, okay, he hasn't proven himself yet. Netha Kontanayal can hit the big shot, then the bowling to follow. So I think with Sanju Samson, what number he bats at, this will be of prime importance. He likes to bat at 3, you know, because he likes to bat at 3 because he wants to have the bulk of the scoring. थोड़ा बहुत power play में भी 2-3 over मिल जाएंगे शायद. Usually, you know, you'll get a couple of overs there, and he prefers that, you know. So if he bats at 4, जो थोड़ा सुनाई दे रहा है कि 4 number, then it'll take him out of his comfort level. So ये भी देखना चाहिए, but he needs to have a big season for them, because when I look at the batting, George Butler is one guy who can have a 500-run season. Padikkal is one, Sanju Samson is one. The others I see, the Jaiswals, the Hetmeyers, the Riyan Parags, they can chip in. So he will be one of those bankers that Rajasthan will look to for a 500-run plus season if you want to do well with the bat. देवदत्त पादिक्कल की भी आपने बात की। देवशीष, आप पे आती हूँ। पादिक्कल, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ही विल बैट एट नंबर 3, अ न्यू रोल फॉर हिम। ओपनिंग कर रहे थे, उनको ओपनिंग से हटा के नंबर 3 पे लेके आना, या अगर लेके आते हैं, विल इट बी अ राइट डिसीजन? क्योंकि बटलर ऐसे हैं जिनको आप चाहेंगे ओपनिंग करें और पावर प्ले का यूज करें। अगर बटलर ऐसे बंदे हैं कि आपको फास्टेस्ट सेंचुरी भी देके जा सकते हैं।
Ideally he should have opened the batting for Rajasthan Royals I with, agree. with I Butler, agree. because the left hand right hand combination, so that would have been ideal, and Yashasvi Jaiswal can come in the middle order, and as Jadidda rightly mentioned, that Sanju Samson should promote himself at number 3. So it leaves with a lot of firepower at the top. So if these three can fire, because this, if you look at the Rajasthan Royals batting, the core of the batting lies in the top 3. Devdutt Padikkal, Sanju Samson, and Josh Butler, and to some extent Simran Hetmeyer towards the lower half, lower in the middle order. So ideally, if you ask me, Rimaji, I would prefer to see Devdutt Padikkal opening the batting with Josh Butler, not Yashasvi Jaiswal. 3 ओपनर हैं Rima, इंडिया के और तीनों इन्होंने अपने पास ले लिए हैं. देखेंगे कि एक yeah, ट्रॉफी वो Rimaji, कैसे सुलझाएंगे. Rimaji, if I can just add to that, so when Yeah, you please. make the team in the auction, it's very important किसको आप कब खिलाओगे. अगर आप 4 ओपनर ले Absolutely. लिए, then you're forcing the number 3 to play 4. So it's very important. अभी यशस्वी जायसवाल को आप ले लिए, आप जॉश बटलर को ले लिए, देवदत्त पडिक्कल ले लिए. So now what is happening? Your best batsman in the team, it has to bat at 4 instead of 3. And Sanju likes to play fast bowling. Even if the spinners are bowling, he likes to play in the power play, the spinners, where there are 2 fielders outside the circle. He doesn't like to come and bat in the 7th over, jab field spread out ho chuka hai, and then he has to play spinners. That's not his comfort level. And if he's your best player, then you have to give him what he likes. स्पॉट ऑन जयदीप, क्योंकि आपने ऑक्शन पे ओपनर तो ले लिए, विच इज फेयर इनफ, आप बैकअप लेते हैं, लेकिन आपने वो अपने ले लिए जो प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं. तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा जिसका जवाब राजस्थान को ढूंढना होगा. लेकिन इसके बाद हम आते हैं, अगर हम कोई बैटल देखना चाहें इस मैच में, तो आप क्या देखना चाहेंगे देवशीष? कैरेबियन बैटल बिटवीन पूरन एंड हेटमायर, कौन आपको लगता है कि आज किसका बल्ला चलने वाला है? या फिर if you ask me, Nicholas Puran going for 10.75 crore, there's no justification. That's a huge number. There's no justification. 10.75 crore. That is in Devashish Sen's league. That money is in Devashish Sen's league. He understands. But obviously we would all be looking for this Caribbean flavor. We saw a few days back what Odean Smith has done. The power hitting we saw, and both Shimran Hetmeyer has done well for Delhi Capitals when he used to play for Delhi Capitals, and Nicholas Puran also, we know, he played a few good knocks in the IPL in last season as well. But then I would, for me, I would definitely look forward to Devdutt Padikkal, because see, he is definitely someone who we can bank on. Means with the T20 World Cup, you never know. So if you ask me, I would bank some. I would love to watch Devdutt Padikkal going great guns and scoring some runs. So मैं ये कह सकती हूँ कि आप जो अभी तक 4 मैचेस हुए हैं, इसमें एक ना एक इंडिया सितारा निकल के आया, एक स्टार निकल के आया, चाहे वो आयुष बदोनी हो, चाहे वो अभिनव हो, चाहे वो तिलक हो. तो इसमें आप पडिक्कल के साथ जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, हर एक आप जितने सारे नाम किया, एवरीवन इज अनकैप्ड प्लेयर्स. So this is something refreshing to see, because these uncapped players, they don't have that pressure of playing in the IPL. So take the instance of Badoni yesterday. What a knock he played. So this is what IPL does for a youngster. जयदीप, आप कौन सा बैटल देखना चाहेंगे? बटलर वर्सेस इमरान मलिक? Yeah, it's a great question. मुझे तो कुछ इंडियन बैटल दिख रहा है. T20 वर्ल्ड कप टीम के लिए रविचंद्रन अश्विन बोल रहे हैं, मेरे को लीजिएगा. उधर में वाशिंगटन सुंदर बोल रहे हैं, मेरे को भी लीजिएगा. सो मुझे तो कुछ इंडियन बैटल्स भी दिख रहा है. प्रसिद्ध कृष्णा बोल रहे हैं, मैं तो अच्छा डाल रहा हूँ. नटराजन बोल रहा है, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा डाल चुका हूँ, मेरा इंजरी था, मुझे भी देख लीजिएगा. तो मुझे काफी इंडियन बैटल्स भी तो दिख रहे हैं टीम के लिए, अल्टीमेट टीम के लिए. और हमने शो के शुरू में कहा था कि यस, दिस इज नॉट ओनली अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जस्ट फॉर द इंडियन प्लेयर्स. Even a West Indian, a South African has a tremendous IPL that will do very well for him making it to his country team. IPL is as good as it gets. It's a really tough league. So if you can come and hold your own, आपको 24-25 विकेट मिला है, या आपने 400 रन बनाए, या जो भी आपने 300 रन बनाए और 18 विकेट as an all-rounder, that just goes well. But yeah, I agree that मुझे लग रहा है इधर में, see, as of now, on paper, I mean, Rajasthan looks stronger just because of the firepower that they have. बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग में, you know, like we've said, even see प्रसिद्ध कृष्णा and नटराजन opposite sides, उमरान मलिक, we know, but pace आपको पता है can be a big enemy अगर जगह पे आप नहीं डालोगे. You know, we know that pace
is a great thing to have. लेकिन अगर जगह पे डालोगे, which Mohammad Shami did, अगर जगह पे नहीं डाला, then that becomes your biggest enemy also. You know, it turns around, especially in the power play when you bowl it. Pings off the bat, we know that. So all in all, a superb game to come on. Nicholas Puran and Hetmar का तो fight है ही, लेकिन ये दोनों West Indies team में खेलेंगे. They are there in the T20. I think a lot of Indian players will be saying, like Ravichandran Ashwin in the white ball has been silent after South Africa. So he might come and say, okay, you've gone back to Washington, Sundar, but I can still hold my own. You know, not only in red ball, but in white ball as well. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इसी में मैं इसी पे रहूंगी अभी। राजस्थान की बैटिंग की आपने बात की, स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, लेकिन 5 और 6 नंबर हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है वहाँ। शायद रियान पराग जिन्होंने प्रैक्टिस गेम्स में अभी आईपीएल की प्रैक्टिस गेम में राजस्थान के लिए अच्छा किया तो उनको फॉर्म के लेके गए हैं, लेकिन छोटा कद, बड़ा जिगर, चाहल वो इस टीम का हिस्सा बने हैं। देवशीष, उनको कैसे देखते हैं कि इन विकेट्स पे उनका कैसा ये आईपीएल जाने वाला है? पहले बैंगलोर के लिए खेलते थे, वहां पे अराउंड अबाउट 7.5 की उनकी इकोनॉमी थी, अच्छा करते थे। यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे उनसे? Yeah, I think he will play with lot of freedom because he had someone like Ravichandran Ashwin who will be there along with him. So it will augur well for Rajasthan Royals side, if you ask me. As I totally agree with Joydeep, the Rajasthan Royals have a slightly have that edge because as far as bowling, and also we did forget to mention the name of Trent Bolt. Rajasthan Royals have someone like a Trent Bolt, who we all know what a player he has been for the Mumbai Indians over the years, and now he will be with a new franchise. So Prasidh Krishna, it's a lot. He will have a lot to learn from someone like a Trent Bolt, bowling in tandem with Trent Bolt, and then you have a firepower of Nathan Coulter, and so they have a lot of firepower as far as the bowling is concerned. They have the pace and they have the guile of the Ashwin and Yajuvendra Chahal. But if you look at Sunrisers Hyderabad bowling attack, I think they lack that variety. I think the spin department is very weak. They have only Washington Sundar to rely upon. And also, I would say Bhuvneshwar Kumar, Natarajan is coming after injury. Bhuvneshwar Kumar, he hadn't had that. I won't say he has passed his prime, but he hadn't had the great of white ball cricket in recent times. True. So and Umran Malik, obviously he does have pace, and Abdul Samad also can chip in. But if you ask me, I think Sunrisers Hyderabad does have a weakness as far as the bowling is concerned compared to Rajasthan Royals. एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर उनको कुछ अपनी छाप छोड़नी है तो बैटिंग में उनको थोड़ा सा पावर हिटिंग दिखाना पड़ेगा। अब्दुल समाद उसमें है, और लेकिन उमरान मलिक पे ना एक दाव खेला है, उनको रिटेन किया है, यानी भरोसा जताया है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर रहने वाले हैं। चाहे कहते हैं जैसे कि जयदीप ने कहा था कि गति दुर्गति कर देती है अगर आप जगह पे ना डालो, लेकिन राजस्थान एक सेटल साइड नजर आ रही है। बैटिंग की बात की थी, बॉलिंग की भी साइड है, बॉलिंग अच्छी नजर आ रही है। आर अश्विन, नेथन कोल्टरनाइल, चाहल, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, रेहान पराग भी बॉलिंग करते हैं, तो दोनों साइड जो है वो एक स्टेबल नजर आ रही है, लेकिन सॉलिड जो नजर आ रही है वो राजस्थान रॉयल्स। तो प्रेडिक्शन पे आते हैं, क्या लगता है आज कौन सा रंग जीतेगा, ऑरेंज आर्मी या पिंक सिटी? I'll go first. Yeah, I'll go first. I think also with the bowling, you were saying that Prasidh Krishna is playing for India, Trent Bolt playing for New Zealand, Chahal, number 1 bowler for India, Ashwin playing for India, Coulter in and around Australia. Other side, Natarajan was injured, came back, got injured again in Vijay. Mustaq Ali came back, missed games. Umran Malik not there yet. Bhuvneshwar Kumar not what he was. Only Washington Sundar is playing for the country. So on form, you know, the bowling for Rajasthan looking much stronger. I'm going with Rajasthan just with the strength on paper. Devashish, your take? I will also go with Rajasthan. से मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो पिंक पहन के इसलिए आई हूँ आज। सारे पिंक पैंथर्स है, तो मैं तो राजस्थान के साथ हुई हूँ, तो आज राजस्थान के रजवाड़े। Silly question after seeing the t-shirt. True. So आज तीनों वोट जा रहे हैं राजस्थान को, यानी कि दाल बाटी चूरमा आज खाने को शायद मिल सकता है। जाते जाते एक क्वेश्चन हो, पिक योर वन प्लेयर फ्रॉम बोथ द टीम जो आज में आपको लगता है एक मैच विनर बन के आ सकते हैं। एनी प्लेयर फ्रॉम SRH एंड RR। देवशीष, आपके पास चलते हैं पहले। Yeah, I would say I would go with for Sunrisers. I would go with Rahul Tripathi because a lot will depend. Obviously, you have someone like a Kane Williamson, but I would still go with Rahul Tripathi. And for Sunrisers, I would love to see Yajuvendra Chahal doing well. Yajuvendra Chahal and Rahul Tripathi, both Indians.
जयदीप, आपका कौन? Yeah, I'll go with Nicholas Puran and Josh Butler, but I also feel that with the bigger boundaries, our Bangalore mein khele, ball pings off the bat, he will enjoy bowling here. You know, the ball will not ping off the bat so much. The boundaries are much bigger in Pune, so I think Chahal will be outstanding this season because he will enjoy. These are actually better conditions for bowling than he has done all his life in Bangalore. Pick one. Pick one. It's a tough choice. Pick Okay, one. okay, yeah, Josh Butler and Nicholas Puran. So, 2 इंडियन प्लेयर देवाशीष के और 2 ओवरसीज प्लेयर जयदीप के। इसी के साथ मिलते हैं हम शो के बाद एक बार जब मैच खत्म होगा वैसे ही आएंगे। तब तक के लिए आरआर जो है वो हमारी वोटिंग जो है वो आरआर की तरफ जारी है। शो में आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया देवाशीष एंड जयदीप। मिलेंगे, बने रहना हमारे साथ, मैच देखिए, एंजॉय कीजिए, बने रहना, मिलेंगे शो के बाद। थैंक यू। धन्यवाद।